before, because the Election Commission order denying the PTI, the symbol came on the 22nd of December 2023. So we had actually submitted our lists for reserved seats for both women and non-Muslims by the 22nd. With the affiliation certificate of... Yes. So this. Now I come to page 2, sir. ये मैंने एज अ सैंपल के तौर पे लगाया है सर, सिर्फ कि ये जो अनाउंस होते हैं रिजल्ट, बिकॉज हिज लॉर्डशिप इट इंक्वायर्ड अबाउट द अनाउंसमेंट ऑल्सो। आपने ये बताया ना कि इसके बाद 2 दिन एक्सटेंड हुए फॉर जी फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर्स, और उसके बाद ये ठीक है सर। फिर just go through this thing. जी First is the important one is the nomination paper last filing date. जी Then the names of the candidates are published जी in the newspaper. Number 3. No, they are published on the website, I think. Okay, not I in keep the going through it. जी. Then comes last date of scrutiny. जी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट है No, एक second. जी Scrutiny also of the women and the... yes Okay. yes Let's then appeals, then last date of appeals, publication of revised list of candidates, last date of withdrawal of candidature, रिवाइज लिस्ट 12 allotment of elections, जी, symbol to contesting candidates and polling date. Correct. ठीक सर। इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी, सिर्फ मैं पेज 2 इसलिए दिखा रहा हूँ। Sorry, just 1 minute. In this schedule, in the publication of revised list of candidates, are the reserved lists also published or not? They are published as far as I am aware. They are like any other candidate, sir. जी So the revised list includes the reserved seats. yes आपका कहना है कि नॉमिनेशन पेपर्स से पहले पार्टी ने लिस्ट भी देनी है और अपने कैंडिडेट रिजर्व सीट के लिए नॉमिनेशन पेपर्स भी आने हैं। जी लिस्ट भी देनी है और नॉमिनेशन पेपर्स। ये तो शुरू में ही देनी है ना, जी, 104 जी, के तहत, जी, सेक्शन जी, 104 के तहत देनी है। जी बिफोर इलेक्शन। जी नहीं, उनको भी उसी 62 और 63 के तहत गुजरना पड़ेगा। दिस इज द लॉ। जब मैं वो सेक्शन पढ़ूंगा तो दे गो थ्रू द सेम For the स्क्रूटनी। PTI, did the revised lists contain the reserved lists जी candidates? जी I would have filed that, but our office has been sealed, so all our documents are in that office. That is why we are handicapped, but they are with the Election Commission. No. They can नहीं, provide. देखिए, I don't make such statement, fleeting statement. If you want an order, we'll pass an order. If you Sir, अगर don't, DC नहीं देखिए ऐसे ना करें। ऐसे आपने by the way kind of thing है, you filing a document which if your case is affected by it, we would want your document to Sir, be. I should have access to those documents. How will we know, Mr. Faisal Siddiqui? There's only one way to know things, that is by filing something in the court. चेयरमैन सर बात दुरुस्त है ना, सील्ड है उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। I don't want him to address. Please, you answer. ये ना करें। जी डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये बातें नहीं। आपको एप्लीकेशन देना है, दीजिए। जी मैं दे दूंगा बिल्कुल। ये ऐसे but don't make these statements are not part of the record. जी मैं बिल्कुल So एप्लीकेशन next each time you'll say this document is नहीं। ये ना करें। हाँ, we'll certainly give you access. नहीं, thank If there is a genuine, if there's an application, अभी order कर देंगे उस पे। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल।